हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्विज क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द इंग्लिश वर्ड कंप्यूटर? अंग्रेजी शब्द कंप्यूटर का मूल अर्थ क्या है? एंड द ऑप्शंस आर अ टाइप ऑफ टेलीस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक apparatus, cathode ray tube, and a person who makes calculations. And the answer will be D, that is a person who makes calculations. And the next question is what is the primary function of a graphics card? Graphic cards का primary function क्या है? And the options are to store files and documents, to display image and render video, to process CPU instructions, and to regulate power supply. And the answer will be B, that is to display image and render video. And the next question is IBM 1401 belongs to which generation of computers? IBM 1401 किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? And the options are first generation, second generation, third generation, and fourth generation. And the answer will be B, that is second generation. And the next question is what is Oracle? Oracle क्या है? And the options are operating system, word processor, database software, and none of these. And the answer will be C, that is database software. And the next question is which generation of computers use vacuum tube? किस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है? एंड द ऑप्शंस आर फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, एंड फोर्थ जनरेशन. एंड द आंसर विल बी ए, दैट इज फर्स्ट जनरेशन. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेमोरी इज यूज्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर? कौन सी मेमोरी का यूज कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर रोम, रैम, कैच, एंड हार्ड ड्राइव. And the answer will be A, that is ROM. And the next question is which device is used to input graphical image into a computer? कंप्यूटर में ग्राफिकल इमेज इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? And the options are scanner, keyboard, mouse, and monitor. And the answer will be A, that is scanner. And the next question is which device is used to display output from a computer? कंप्यूटर से आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? एंड द ऑप्शंस आर मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, एंड ऑल ऑफ द अबव. एंड द आंसर विल बी डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरो पॉइंटर यू सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड. आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले एरो पॉइंटर को क्या कहा जाता है? एंड द ऑप्शंस आर बटन, स्लाइडर, स्क्रॉल बार, एंड कर्सर. And the answer will be D, that is cursor. And the last question is which language is commonly used for artificial intelligence programming? Artificial intelligence programming के लिए आमतौर पर किस भाषा का उपयोग किया जाता है? And the options are Fortran, COBOL, Prolog, and C. And the answer will be C, that is Prolog.